Hello friends, welcome all of you on my YouTube channel here, Anand's Nursing File. Today in this video, we are going to learn about important nursing care plan from mental health nursing, that is dementia. And through this video, you learn this care plan very easily, and this video helps you to write the nursing care plan in examination work purpose or for the assignment work purpose. तो फ्रेंड्स आज हम वीडियो में डिमेंशिया का नर्सिंग केयर प्लान यहाँ लर्न करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान ऑन डिमेंशिया। नर्सिंग केयर प्लान में हम डिफरेंट नर्सिंग प्रोसेस स्टेप्स यूज़ करेंगे, जिसमें नर्सिंग असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग और इंटरवेंशन, रेशनल, इम्प्लीमेंटेशन एंड एवेल्यूशन, ये सारे स्टेप्स होंगे। नर्सिंग केयर प्लान से पहले एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखते हैं डिमेंशिया के बारे में, देन हम यहाँ वीडियो में टोटल 5 नर्सिंग केयर प्लान्स यहाँ देखने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन अबाउट डिमेंशिया। A dementia is a general term that presents a group of disease and illnesses that affect your thinking, memory, reasoning, personality, mood, and behavior. The decline in mental function interfere with your daily life and activities. A dementia is a broad term that describes a loss of thinking ability, memory, attention, logical reasoning, and other mental abilities. And dementia describes various symptoms of cognitive decline such as forgetfulness. It is a symptoms of several underlying conditions and brain disorders such as Alzheimer's disease. तो ये था शॉर्ट इंट्रोडक्शन और कुछ डिमेंशिया की डेफिनेशंस। नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है वीडियो का, नर्सिंग केयर प्लान फॉर डिमेंशिया पेशेंट। तो यहाँ वीडियो में हम टोटल 5 नर्सिंग केयर प्लान देखेंगे डिमेंशिया के। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट नर्सिंग केयर प्लान जो होगा डिस्टर्ब सेंसरी परसेप्शन। नर्सिंग केयर प्लान में सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा में लिखना है हमको इनअप्रोप्रिएट रेस्पॉन्सेज, सीइंग और हियरिंग थिंग्स दैट आर नॉट देयर, मीन्स हेलुसिनेशन। एंड ऑब्जेक्टिव डाटा tilting head as if to listen to something, disorientation, changes in sensory acuity, behavior and altered pattern of communication, lack of attention, disorientation, lack of attention, looking anxious and panic। तो यहाँ पर हमको लेक ऑफ अटेंशन एक बार लिखना है, भाई मिस्टेक 2 टाइम्स हमने लिख दिया है। तो आफ्टर राइटिंग ऑब्जेक्टिव डाटा के बाद हमको यहाँ पर नर्सिंग डायग्नोसिस लिखना है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा वी राइट द नर्सिंग डायग्नोसिस। तो नर्सिंग डायग्नोसिस होगा डिस्टर्ब सेंसरी परसेप्शन रिलेटेड टू डिमेंशिया। गोल होगा टू इम्प्रूव सेंसरी परसेप्शन। नेक्स्ट देखते हैं प्लानिंग और इंटरवेंशन, रेशनल इम्प्लीमेंटेशन। प्लानिंग और इंटरवेंशन में हमको क्या क्या इंटरवेंशन प्लान करने पेशेंट के लिए। रेशनल इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस इंटरवेंशन, मीन्स जो इंटरवेंशन हम पेशेंट को देने जा रहे हैं उनके पीछे क्या रीज़न है। और इम्प्लीमेंटेशन फेज इज़ द एक्टिंग फेज ऑफ द नर्सिंग केयर प्लान, मीन्स जो इंटरवेंशन हमने प्लान किए उनको एक्शन में लाना है, अप्लाई करना है। तो देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट इंटरवेंशन है हुआ एस्टेब्लिश रैपोर्ट विद क्लाइंट। रेशनल होगा टू मेक थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप। इम्प्लीमेंटेशन लिखना है रैपोर्ट एस्टेब्लिश विद द क्लाइंट। नंबर सेकंड, मॉनिटर एनी साइंस ऑफ इंक्रीजिंग फियर, अनइजीनेस और एंजाइटी। रेशनल होगा इट कैन बी एन इंडिकेटर ऑफ हेलुसिनेटरी एक्टिविटीज़। इम्प्लीमेंटेशन लिखना है मॉनिटर्ड साइन ऑफ इंक्रीजिंग फियर, अनइजीनेस और एंजाइटी। नंबर थर्ड, असेस द पेशेंट्स कन्फ्यूजन स्टेट, level of disorientation, behavioral changes, disorientation in mental acuities and responses। रेशनल में लिखना है कॉग्निटिव बिहेवियर इज proportionate to the sensory acuity of a person। इम्प्लीमेंटेशन होगा assess the patient confusion state। नंबर फोर्थ, evaluate the patients for any senses for any deviation। नंबर ए, hearing। रेशनल होगा विजन, हैविंग विजुअल इश्यूज कैन काउजेज चैलेंजेस ऑन द पेशेंट्स मोबिलिटी एंड सोशल लाइफ। नंबर बी, हियरिंग का रेशनल होगा हियरिंग लॉस कैन रिजल्ट टू एडिक्वेट और इनएक्यूरेट इंटरप्रिटेशंस ऑफ
words that would promote poor communication and isolation. Number C, taste and smell. Here this logo, taste and smell. A deteriorating sense of taste or smell can cause the patient to lose interest in the eating. Number D, touch. Touch में रेशन होगा. Diminishing tactile perception is common in the elderly, therefore increasing injury risk. Next number fourth, implementation में लिखना हमको evaluated the patient senses for any deviation. नंबर फिफ्थ देखते हैं यहाँ पर give appropriate interventions for perception issues. Hearing aids, corrective glasses, ear medications, telephone amplifier, the using of flashlights. This will help the patient in promoting activity of daily living. Implementation लिखना appropriate interventions given. Number 6 देखते हैं educate the family and carer on the application of ear or ear medications. रेशन होगा medication compliances involving the patient's family and or carer will preserve acuity and prevent further loss of function. Implementation लिखना है of education given. Number 7 educate the family and or carer on the use of assistive devices, cleaning and troubleshooting. Relation होगा involve the family in the upkeeping of assistive devices, ensure the proper functioning of the devices and the desired enhancement of compromised senses. Implementation होगा education given as per interventions. Number 8 reduce environmental stimuli as much as possible. Example are low volume noise and minimal activities. Relation होगा lessen the possibility of anxiety that might aggravate hallucinations. Implementation में लिखना है environmental stimuli reduced. Number 9 educate the family and or carer on the necessity of routine vision and hearing exam. Relation होगा routine exams will ensure the assistive devices are adjusted according to the current need of the patient. Implementation में लिखना है education given as per interventions. Number 10 involve the patient in reality based activities like card playing, writing, drawing, doing simple art and craft work and or listening music. Rational में लिखना है the use of acceptable activities in redirecting the patient attention can reduce the chances of doing the hallucinatory command. Implementation में लिखना है patient involvement activities. Number 11 accept and support clients feelings. Rational का to reduce the client's fear and anxiety. Implementation में लिखना है clients feeling accepted and supported. Number 12 educate the family on rendering modifications that are important in enhancing the patient's vegan sense and appropriate. Implementation लिखना है rational लिखना है involving the family in environmental modification promotes patient safety and the prevention of debilitating injuries. Implementation लिखना है education given as per interventions. After writing these interventions we write here the evaluation steps. तो देखते हैं यहाँ पर evaluation step for first nursing care plan. एवेल्यूशन देखना है डिस्टर्ब सेंसरी परसेप्शन का फर्स्ट नर्सिंग केयर प्लान जो हमने यहाँ लिखा है उसका एवेल्यूशन लिखना है नाउ सेंसरी परसेप्शन इम्प्रूव्ड. जो हमारा गोल था टू इम्प्रूव सेंसरी परसेप्शन वो हमने अचीव किया है बाई डिफरेंट इंटरवेंशन और उसको हम यहाँ पर एवेल्यूशन में लिखते हैं. तो इस तरह से नर्सिंग केयर प्लान नंबर फर्स्ट को हम कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर सेकेंड. नर्सिंग केयर प्लान नंबर सेकंड हो गया यहाँ पर डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस. देखते हैं इसमें सबसे पहले नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा व्हेन आस्किंग क्वेश्चन पेशेंट गिविंग आंसर इनअप्रोप्रिएटली एंड डिसओरिएंटेड मैनर. ऑब्जेक्टिव डाटा में डिक्रीज अटेंशन स्पान, easy distractibility, poor coordination and motor functions, difficulty handling complex tasks, looking confusion and disoriented, inability to do activities of daily living. After writing these data, we write the nursing diagnosis. तो nursing diagnosis होगा यहाँ पर disturbed thought process related to changes in cognitive abilities secondary to dementia. गोल होगा to maintain appropriate mental and psychological functioning. Intervention देखते हैं first assess the patient's level of confusion. रेशन होगा to monitor effectiveness of treatment and therapy. Implementation होगा assess the patient's level of confusion. नंबर सेकंड देखते हैं assess the patient performing activities of daily living. रेशन होगा to maintain a good quality of life and promote dignity by allowing the patient to perform their activity of daily living. Implementation लिखना है patient assisted. नंबर थर्ड simplify task for the patient by using simple word and instructions. रेशन होगा dementia patient may have
Difficulty handling complex tasks. Implementation लिखना है, simple instructions given. Number 4, provide opportunities for the patient to have meaningful social interactions but never force this होगा to prevent feeling of isolation. Implementation होगा opportunities provided. Number 5, encourage client to discuss experiences. this होगा to identify threatening thoughts and feelings. Implementation होगा encourage client to discuss experiences. Number 6, allow the patient to take time and think about what to do, so to say or do. Rational होगा to help the patient have enough time to communicate. Implementation होगा allow the patient to take time and think about what to say or do. Number 7, divert attention to a client when agitated. Rational होगा to promote safety and prevent risk for injury. Implementation होगा पर attention diverted. After writing these interventions, we write the evaluation steps. तो देखते हैं केयर प्लान नंबर 2, डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस का इवेल्यूशन. तो यहाँ पर इवेल्यूशन में हमको लिखना है एस्टेब्लिश्ड ऑप्टिमल मेंटल एंड फिजिकल फंक्शनिंग. तो इस तरह से केयर प्लान नंबर 2 को हम कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर 3. नर्सिंग केयर प्लान नंबर 3 हो गया पर इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन. तो देखते हैं इसमें नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा, इनअप्रोप्रिएट वर्बलाइजेशन बाय पेशेंट, ऑब्जेक्टिव डाटा कन्फ्यूजन, एफेजिया, एप्रेक्सिया, एग्नोसिया, डिस्लेलिया. नर्सिंग डायग्नोसिस में देखते हैं यहाँ पर नर्सिंग डायग्नोसिस में लिखना है इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन रिलेटेड टू डिमेंशिया. गोल होगा टू मेंटेन इफेक्टिव स्पीच एंड कम्युनिकेशन. इंटरवेंशन देखते हैं फर्स्ट असेस द पेशेंट्स एबिलिटी टू स्पीक. रेशन होगा दिस आइडेंटिफाइज प्रॉब्लम एरिया. इम्प्लीमेंटेशन होगा असेस पेशेंट एबिलिटी टू स्पीक. नंबर 2, evaluate the patient's communication skill. रेशन होगा हेल्प इन फॉर्मुलेटिंग इफेक्टिव एंड एफिशिएंट प्लान ऑफ केयर. Implementation होगा communication skill evaluated. Number 3, assess the effect of communication issues on the patient. Relation होगा communication skill of a patient diminish continuously as dementia become more progressive. Implementation होगा assess the effect of communication issues on the patient. Number 4, observe how the patient utilize non-verbal communication cues such as facial reactions, example smiling or crying, pointing, mannerisms and gesture, etc. Rational होगा recognizing these cues can help the healthcare team assess the patient with his needs. Implementation होगा पर observe how the patient utilize non-verbal communication cues. Number 4, evaluate the patients for hearing issues, allowing for the use of assistive devices when needed. Rational होगा it will help the healthcare team address his or her communication difficulties. Implementation होगा patients hearing issue evaluated. Number 6, ensure to face-to-face interaction with the client. This will promote communication. Implementation face-to-face interaction. Ensure. Number 7, make sure to provide a calm environment free from distraction. Reduce distraction will allow the patient ample time to progress and react to the conveyed information. Implementation calm and quiet environment provided. Number 8, refrain from rushing the patient to express himself, especially during episode of struggling to communicate or remember. Rational होगा patient with communication issue can cause feeling of isolation and despair. Showing compassion by taking time when interacting with the patient will foster a healthy patient-nurse relationship. Implementation मिल refrain from rushing the patient to express himself. Number 9, utilize simple direct queries that would only need one word responses. Repeat and reward the question as needed to clarify the information delayed. Rational होगा simple and clear sentences promote improved understanding of the relayed information for patient with impaired verbal communication. Implementation होगा focused on simple and clear sentences. Number 10, utilize the therapeutic touch as appropriate. Rational होगा useful in rendering a calming effect for anxious patient with communications issue. Implementation होगा therapeutic touch utilized. Number 11, encourage patient to participate in more social activities. Rational होगा social activities will help reduce the patient's anxiety and feeling of isolation that may lead to depression. Implementation होगा encourage patient to participate in more
Social activities. Number 12. Refer to speech therapist रेशनल को provide a specialized care for the patient to improve communication. Implementation लिखना है refer to speech therapist. After writing these interventions, we write the evaluation. तो देखते हैं यहाँ पर evaluation. थर्ड केयर प्लान का evaluation यहाँ पर है इफेक्टिव स्पीच एंड कम्युनिकेशन मेंटेन्ड. तो इस तरह से केयर प्लान नंबर 3 को कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर 4. नर्सिंग केयर प्लान नंबर 4 तो यहाँ पर इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी. तो देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट में subjective data patient says that I am having difficulty handling complex tasks and inability to do activities of daily living as normal. Objective data देखते हैं problem with coordination and motor functions, confusion, disorientation, immobility. Nursing diagnosis देखते हैं यहाँ पर impaired physical mobility related to cognitive and perceptual impairment. गोल होगा the patient will be able to perform activities of daily living. Intervention होगा first assess the patient's level of functional mobility and ability to perform activity of daily living. Rational होगा to assist in creating an accurate diagnosis and monitor effectiveness of the treatment and therapy. Implementation होगा assess the patient's level of functional mobility and ability to perform activity of daily living. नंबर सेकंड देखते हैं. सेकंड होगा assess client's degree of cognitive impairment. रेशनल होगा help to determine the presence of deficits. Implementation होगा पर assess client's degree of cognitive impairment. नंबर थर्ड provide enough time to perform activities. रेशनल होगा extra time provide assistance to perform activities. Implementation होगा provided enough time to perform activities. Number 4 assist the patient during exercise and when performing activities of daily living. Consider one-to-one nursing. Rational होगा to encourage the patient to performing muscle strengthening exercise and promote dignity by allowing the patient to perform their activity of daily living while maintaining safety. Implementation होगा assisted patient during exercise. Number 5 simplify tasks for the patients by using simple word and instructions. Rational होगा dementia patient may have difficulty handling complex tasks. Implementation होगा task simplified. Number 6 ensure the safety of the environment. Rational होगा to maintain patient safety and reduce the risk of fall. Implementation होगा environmental safety ensured. Number 7 encourage the patient to perform range of motion exercises in all extremities. Rational होगा to improve venous return, muscle strength and stamina while preventing stiffness and contractures deformation. Implementation होगा पर encourage the patient to perform range of motion exercises in all extremities. Number 8 refer to the physiotherapy and occupational therapy team. Rational होगा to provide a specialized care for the patient to gain physical and mental support in performing activity of daily living and mobilizing. Implementation होगा पर refer to physiotherapist and occupational therapist. After writing these interventions, we write the evaluation steps. तो देखते हैं केयर प्लान नंबर 4 का evaluation. तो evaluation लिखने पर now patient is performing activities of daily living within the limits of disease. तो ये था केयर प्लान नंबर 4. नेक्स्ट देखते हैं केयर प्लान नंबर 5 फॉर डिमेंशिया. केयर प्लान नंबर 5 हो गया पर एंजाइटी. तो देखते हैं इसमें नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा express concern about the changes in cognitive abilities and objective data restlessness, apprehensiveness, irritability, altered sleep pattern. Nursing diagnosis होगा पर anxiety related to rationalization of diminishing abilities secondary to dementia. गोल होगा to reduce anxiety. Planning or intervention देखते हैं first assess the patient's level of anxiety. Rational होगा help in early intervention process. Implementation होगा assess the patient's level of anxiety. Number second observe for the early clinical manifestations of fatigue and agitation. Rational होगा prompt problem identification can result in early interventions process. Implementation होगा पर observe for the early clinical manifestation of fatigue and agitation. Number third keep the patient away from anxiety causing situation or factors. Rational होगा to reduce anxiety. Implementation होगा पर keep the patient away from the anxiety causing situation or factors. Number fourth ensure that the patient daily routine is kept consistent as much as possible.
Ensuring that the schedule is maintained will enhance feeling of familiarity for the patient. Implement इसको ensure that the patient daily routine is kept consistent as much as possible. Number six, fifth, discuss activities of daily living with the patient and ensure that he or she gets adequate rest periods. Reasonable adequate rest periods are essential in the maintenance of a person's well-being, especially for the anxious patient. Implementation होगा पर discuss activities of daily living. Number six, discuss effective methods of problem solving with the patient, improving the patient's problem identification and learning to address this problem efficiently promote a sense of control and well-being. Implementation होगा discuss effective methods of problem solving with the patient. Number seven, reassure the patient on the use of positive self-talk. Reasonable assist in managing anxiety and reducing patient stress. Implementation होगा reassure the patient on the use of positive self-talk. Number eight, avoid unnecessary reassurance. This may increase undue worry. Reasonable reassurance is not useful for the anxious individual. Implements unnecessary reassurance avoided. Number 9, converse using a simple language and brief. Rational when experiencing moderate to severe anxiety, patient may be unable to understand anything more than simple, clear and brief instructions. Implementation होगा पर conversation done is simple language. Number 10, assist the patient in developing new anxiety reducing skills. Example, relaxation, deep breathing, positive visualization and reassuring self statements. Rational होगा पर discovering new coping methods provide the patient with a variety of way to manage anxiety. Implementation होगा पर assisted the patient in developing anxiety reducing skills. After writing these interventions, we write the evaluation steps. देखते हैं केयर प्लान नंबर 5 का evaluation. तो ये evaluation होगा एंजाइटी रिड्यूस्ड. हमारा गोल था टू रिड्यूस एंजाइटी, वो हमने अचीव किया है. तो इस तरह से नर्सिंग केयर प्लान नंबर 5 एंजाइटी जो डिमेंशिया का 5th नंबर का केयर प्लान है उसको यहाँ कंप्लीट करते हैं. तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो. आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल प्रिपरेशन फॉर द नर्सिंग कंपटीशन एग्जामिनेशन. जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा यूट्यूब चैनल तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा. थैंक यू.